Dear students, today our topic is identification of alcohols. That is how primary, secondary and tertiary alcohols are distinguished from each other and what are the tests by which we can identify whether it is a primary alcohol or it is a secondary alcohol or it is a tertiary alcohol. First of all, we must know that primary alcohols are those alcohols which contain one alkyl group attached to the carbon atom or carbon bonded hydroxy group. And secondary alcohol contains two alkyl groups. Tertiary alcohol contains three alkyl groups. For example, this is primary alcohol, RCH2OH. This is secondary alcohol, R2CHOH. This is tertiary alcohol, R3. R means R1 alkyl group. R2 means two alkyl groups. R3 means three alkyl, RCOH. These are primary, secondary and tertiary alcohol. ये मैंने पहले ही पढ़ा है classification of alcohols में what are primary alcohols, what are secondary alcohols and what are tertiary alcohols. Now the question is identification of alcohols. That means how primary, secondary and tertiary alcohols can be distinguished from each other. Yani how we can identify an alcohol, whether it is a primary alcohol or whether it is a secondary alcohol. There are various tests by which we can identify the alcohols. For example, the first test is Lucas test. LUCAS, Lucas test. Lucas test. This test is based upon the difference in the reactivity of the alcohols with hydrochloric acid. This test is based upon the reactivity of the alcohol. That is, Lucas test is based upon the reactivity of the alcohols. Reactivity of the alcohols with HCl. Reactivity of the alcohols with HCl. In this test, the alcohol is treated with, in this test, alcohol, the given alcohol, it is treated with concentrated HCl. It is treated with concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. Anhydrous zinc chloride, which is known as Lucas reagent. Lucas reagent. And in this test, the alcohol is treated with concentrated HCl and anhydrous zinc chloride, and it is known as Lucas reagent. Anhydrous zinc chloride. When it is treated with anhydrous zinc chloride and HCl, it gives corresponding alkyl halide. It gives corresponding alkyl halide. Alkyl halide. It may be primary alkyl halide, secondary or tertiary. This alkyl halide is insoluble in water. It is insoluble. This alkyl halide is insoluble in water. ये पानी में हल नहीं होता है. It is the presence of this alkyl. This can be indicated by the appearance of the cloudiness, turbidity or cloudiness. आप cloudiness समझते हो? जिस तरह ये smoke होता है air में, जिस पानी इसी तरह cloudiness in the solution होती है, धुंधला होता है पानी, ये solution, it can be identified by the appearance of the cloudiness in the reaction mixture. It can be identified by the cloudiness in the reaction mixture. And the reactivity of the alcohols is of the order that is first tertiary alcohols react, then secondary alcohols react, and then the primary alcohols react. That means the order of reactivity of alcohols is in the following order. That is, tertiary alcohols react quickly, then after that secondary, then primary. This means
that the cloudiness, appearance of the cloudiness in this reaction mixture will be different for the different alcohol. It will be different for the different alcohol. Tertiary alcohols produce cloudiness immediately. Tertiary alcohols produce cloudiness immediately. Secondary alcohols produce cloudiness after 5 minutes. After 5 minutes. And primary alcohols does not produce cloudiness at room temperature, but produces cloudiness only upon heating. Thus, if the cloudiness or the turbidity appears immediately, then we can say it is a primary alcohol. If the cloudiness appears after 5 minutes, then we can say that it is a secondary alcohol. If the cloudiness appears only upon heating, then it is a tertiary alcohol. So this was the first test, that is called Lucas test. In this, तो मैं आपको एक बार फिर रिपीट करूंगा ये लुकास टेस्ट क्या है ताकि आप समझ जाओगे. तो पहला टेस्ट क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड टर्शियरी अल्कोहल्स का जो पहला टेस्ट है वो है लुकास टेस्ट. एक बार फिर देखिए जिसको समझ नहीं आया, लुकास टेस्ट देखिए. दिस टेस्ट इज बेस्ड अपॉन, पहले ये याद रखना, दिस टेस्ट इज बेस्ड अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कोहल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यानी इट इज बेस्ड अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल with HCl at room temperature. In this test, इस टेस्ट में क्या होता है? इस टेस्ट में जो अल्कोहल होता है, the alcohol is treated with, किसके साथ? Concentrated HCl और anhydrous zinc chloride. This mixture को कहते हैं anhydrous zinc chloride, इसको कहते हैं लुकास reagent. Therefore, it is called Lucas reagent. When it is treated with the alcohol is treated with concentrated HCl plus anhydrous zinc chloride, and it gets converted into corresponding alkyl halide. तो वहां क्या बनाता है? Alkyl halide. It gets converted into corresponding alkyl halide. It may be primary alkyl halide or secondary or tertiary. Corresponding alkyl halide. This alkyl, ये जो alkyl halide है, this alkyl halide, it is insoluble in water. That means it is insoluble in water. Insoluble in water. And it is prisoners. Prisoners can be indicated by the appearance of cloudiness. By the appearance of cloudiness in the reaction mixture. तो हम कैसे कहेंगे वहां अल्काइल हैलाइड बन गया? जब ये रिएक्शन मिक्सचर बनता है तो वहां ये क्लाउडीनेस पैदा होती है, अल्कोहल में. एंड दिस क्लाउडीनेस is different for different alcohols because the reactivity of the alcohols is such that tertiary alcohols react very quickly with HCl, then secondary, then primary alcohols. If the cloudiness, this means that the cloudiness appears immediately in the tertiary alcohols, and it appears after 5 minutes in the primary alcohols, and it appears only upon heating in the primary alcohol. So, if the cloudiness appears immediately, if the cloudiness in the reaction mixture, if cloudiness in reaction appears immediately, then the solution is tertiary. Then the alcohol is tertiary. Alcohol is tertiary. If the cloudiness appears after 5 minutes, and then it is a secondary alcohol. If the cloudiness appears only upon heating, then it is a tertiary. Then upon heating, then it is a प्राइमरी अल्कोहल. तो आपको समझ आ गया लुकास टेस्ट क्या है. लुकास टेस्ट में जो अल्कोहल होता है वो HCl, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ मिलाते हैं जिसको लुकास रिएजेंट कहता है. फिर ये अल्काइल हैलाइड बनाता है.
जब ये अल्काइल हैलाइड बनाता है, ये अल्काइल हैलाइड जो होता है ये इंसॉल्युबल होता है वाटर में। तो ये इसकी प्रेजेंस कैसे मालूम की देखी जाती है, आइडेंटिफाई की जाती है, क्योंकि उस रिएक्शन मिक्सचर में क्लाउडीनेस यानी टर्बिडिटी पैदा होती है। अगर ये टर्बिडिटी क्विकली जल्दी वहां पैदा होती है, इफ द क्लाउडीनेस अपीयर्स इमीडिएटली, तो हम कहेंगे ये टेरिशरी अल्कोहल है। अगर ये क्लाउडीनेस 5 मिनट के बाद वहां पर अपीयर होती है तो हम कहेंगे ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर ये क्लाउडीनेस रूम टेम्परेचर पर नहीं होगी, सिर्फ इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करने पर होगी, फिर हम कहेंगे ये प्राइमरी अल्कोहल है। क्योंकि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कोहल विद HCl is tertiary alcohol is the order of reactivity is tertiary alcohol, secondary alcohol and primary alcohol. That means first they react with tertiary alcohol react immediately, then secondary alcohol, then the primary alcohol. This was the first test by which we can identify the primary, secondary and tertiary alcohols. उसके बाद दूसरा टेस्ट है Victor-Mears test. This question is very important from the examination point of view. तो मुझे उम्मीद है कि तुम सब स्टूडेंट्स अच्छी तरह से इसको समझोगे। Victor-Mears टेस्ट, दूसरा टेस्ट Victor-Mears test. This test is also used for distinguishing primary, secondary and tertiary alcohol. This test involves the following steps. It involves 4 steps. 4 steps. तो पहले स्टेप में the alcohol is treated. पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफ. The alcohol is treated with red phosphorus. The alcohol is treated with red phosphorus plus iodine. तो ये बनाता है alkyl halide, corresponding alkyl iodide. Then in the second step, the corresponding alkyl iodide. The corresponding alkyl iodide is treated with silver nitrite to convert into nitro compound, nitroalkane. To convert into nitroalkane. This nitroalkane is treated with nitrous acid, HNO, HNO2, nitrous acid, to convert it into the nitrolic acid, then nitro compound, then the solution is finally made alkaline with NaOH or KOH. If it gives a red blood coloration, if it gives a red blood coloration with alkali, we can say it is a primary alcohol. If it gives a blue coloration, we can say secondary alcohol. And if it is colorless, we can say tertiary alcohol. तो मैं आपको एग्जाम्पल्स देकर समझाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल हम ले लेंगे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टेरिशरी अल्कोहल. ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल. ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये टेरिशरी अल्कोहल है. टेरिशरी अल्कोहल. तो टेरिशरी अल्कोहल देखिए, प्राइमरी अल्कोहल हो गया RCH2OH. दिस इज ए प्राइमरी अल्कोहल. ये R2, ये आपको समझ आए, 2 अल्काइल ग्रुप्स, CHOH. ये RCOH, ये R3. ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टेरिशरी. तो मैंने क्या कहा Victor-Mears टेस्ट में, पहला स्टेप है द अल्कोहल इज ट्रीटेड विद रेड फास्फोरस एंड आयोडीन. तो इसको ट्रीट करेंगे हम प्लस रेड फास्फोरस प्लस I2, दैट इज आयोडीन. इट विल गिव RCH2I. तो वहां निकलेगा वाटर और निकलेगा हाइड्रोजन आइड. RCH2I हो गया अल्काइल आयोडाइड, प्राइमरी अल्कोहल. ये प्राइमरी अल्कोहल. तो इधर से भी ऐसा ही हो जाएगा. सेकेंडरी अल्कोहल में रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन, ये देगा R2CHI. ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल. तो इसको भी इसी तरह होगा, रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन, तो ये देगा R3CI.
Yani these are called corresponding alkyl halides. This is primary alkyl halide, this is secondary alkyl iodide. This is primary alkyl iodide, this is secondary alkyl iodide, this is tertiary alkyl iodide. Then this alkyl iodide is treated with silver nitride, AgNO2. अगर AgNO3 होगा वो होगा सिल्वर नाइट्रेट, AgNO2 होगा सिल्वर नाइट्राइट. तो AgNO2 इसको भी ऐड करो, AgNO2, तो इसको भी AgNO2, it will give corresponding it will give nitroalkane. तो ये बनेगा RCH2NO2, सिल्वर आयोडाइड निकलेगा, R2CHNO2, R3CNO2. These are called corresponding nitroalkanes. Then in the third step, this nitroalkane is then treated with nitrous acid. Then nitroalkane is treated with nitrous acid, HONO या HNO2 वही होगा. इसको भी करोगे HONO, इसको भी इसी तरह HONO. तो ये बनेगा RCHNOH. इसको नाइट्रोलिक एसिड कहते हैं. तो R2CNO2, तो यहां आएगा NO, इसको सीडो नाइट्रोल कहते हैं. नो रिएक्शन, यहां रिएक्शन ही नहीं होगी. तो फिर इसको करेंगे हम काम, इसको इट इज मेड अल्कलाइन, NaOH ऐड करेंगे, अल्कली. इसको भी अल्कली ऐड करो, इसको भी अल्कली ऐड करो. इसको जब अल्कली ऐड करेंगे, ऑन एडिशन ऑफ एन अल्कली इट विल गिव रेड blood coloration, it will give blue coloration, और इसमें ये कलरलेस होगा. जब ये कलरलेस होगा तो क्या होगा, देखो, if on addition of the alkali it gives red blood coloration, we can say it is a primary alcohol. When it gives blue color, we can say it is a secondary alcohol. When it remains colorless, it has no effect, then it is a tertiary alcohol. This is Victor-Mears test. तो मैं आपको फिर दोहराऊंगा. And Victor-Mears test takes place in 3 steps. In the first step, the corresponding alcohol, तीनों alcohol मैंने दिखाए. The alcohol is treated with red phosphorus and iodine to get converted into the alkyl iodide. यहाँ primary alkyl iodide है, यहाँ secondary alcohol है, ये tertiary alkyl iodide है. Then this corresponding alkyl iodide is treated with nitric oxide, silver nitrite, to convert it into the nitro compound. यहाँ भी nitroalkane है, यहाँ भी nitroalkane है, primary, secondary और tertiary. Then this nitroalkane is treated with nitrous acid. इसका नाम है nitrous acid, NITROUS, nitrous acid, HNO2 nitrous acid, HNO2 है ये, HNO2 यानी nitrous acid. And the solution is finally made alkaline with NaOH. When on alkalination, yani on addition of an alkali, if it gives a red color coloration, then it is a primary alcohol. If it gives blue coloration, it is a secondary alcohol. If it has no reaction, it remains colorless, then it is a tertiary alcohol. So this was the second test. Then the third test. Third test. Action. तीसरा है action with heated copper. Heated copper. When an alcohol is heated with copper to a temperature of 300 degrees centigrade to 350 degrees centigrade, primary and secondary alcohols undergo dehydrogenation.
they undergo dehydrogenation. Dehydrogenation का माना है removal of hydrogen. That is, they undergo dehydrogenation, removal of hydrogen, to form aldehydes. Primary alcohols form aldehydes and secondary alcohols form ketones. Whereas tertiary alcohols undergo dehydration, that means removal of water, to form corresponding alkenes. They form alkenes. तो इस तरह से हमें मालूम इस तरह ये टेस्ट इस तरह आपको पता चला जब हम इसको कॉपर के साथ हीट करते हैं 300 से 350 डिग्री टेम्परेचर तक, तो प्राइमरी अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन होती है, यानी उनको रिमूव होता है हाइड्रोजन गैस, तो वो बनाते हैं अल्डिहाइड्स. सेकेंडरी अल्कोहल्स बनाते हैं कीटोन. टेरिशरी अल्कोहल्स को डिहाइड्रोजनेशन होती है, यहाँ वहां वाटर मॉलिक्यूल लूज होता है और वो बनाते हैं अल्कीन्स. यानी तो एग्जांपल ले लेंगे हम प्राइमरी अल्कोहल्स गिव aldehydes on heating with copper. तो देखेंगे क्या RCH2OH ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्लस व्हेन इट इज हीटेड विद कॉपर 573 केल्विन, और हम कहेंगे इसको 300 डिग्री 623 केल्विन 350 दिस इज टेम्परेचर. इट विल गिव विद कॉपर, तो कॉपर के साथ हीट करेंगे, इट विल गिव RCHO प्लस निकलेगा वहां हाइड्रोजन. दिस इज एन अल्डिहाइड. दिस इज एन, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं RCH2CHO इथाइल अल्कोहल. जब इसको इसी तरह हीट करेंगे, ये जगह R की जगह CH3CH2O, इसको कहेंगे हम एसिटल डिहाइड प्लस निकलेगा हाइड्रोजन. तो secondary alcohols give ketones. Secondary alcohols give ketones. तो secondary alcohols हम लिखेंगे RCH3CHOH प्लस लिखेंगे हाइड्रोजन. इसको हीट करेंगे Cu 573 केल्विन टू 623 केल्विन, यानी 300 डिग्री सेंटीग्रेड. ये बनेगा R, ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो प्लस H2, ये हो गया एसीटोन और वो है कीटोन. तो फिर टेरिशरी अल्कोहल्स CH3 दे गिव अल्कीन CH3, ये टेरिशरी अल्कोहल 3 अल्काइल ग्रुप्स OH, तो इसको कहेंगे CH2H. ये हीट जब करेंगे कॉपर के साथ 573 केल्विन 623, तो यहां वाटर निकलेगा, ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहां बनेगा CH3, ये हो गया अल्कीन. This is the third test which is used for the identification of alcohol. तो पहला टेस्ट मैंने आपको ल्यूकस टेस्ट बताया, दूसरा मैंने आपको विक्टर मेयर्स टेस्ट बनाया. This was reaction with a heated copper. Primary alcohols give aldehydes on heating with copper to a temperature of 300 degrees centigrade to 350. Secondary alcohols give ketones, and tertiary alcohols undergo dehydration. They form alkenes. This is all about today's lecture, and now I am sure that you might have understand how we can identify primary alcohol, secondary alcohol. There is another test, oxidation test, on oxidation with potassium permanganate, acidified potassium permanganate or sodium dichromate or potassium dichromate. Primary alcohols give aldehydes on oxidation, secondary alcohols give ketones, and tertiary alcohols also give alkenes. This is the fourth test. This is all about today's topic. Thank you, sir.